students. Today we discuss about prism formula. So that is the reflection through prisms. So ଆମେ ପଢିବା prism formula. ହେଲା ଏଥିରେ ଆମେ ପहिले ପ୍ରୁଫ କରିବା mu equals to mu ମାନେ refractive index equals to sin a plus bm by 2 by sin a by 2 ଏଥିରେ ପ୍ରୁଫ କରିବା तो ये ए है एंगल ऑफ प्रिज्म बीएम है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये कौन एंगल ऑफ प्रिज्म कौन डेविएशन कौन को क्लियर बुझी है तो आप यहाँ पे कौन करिया बोले ट्रायंगुलर प्रिज्म चूज करा दिस इज प्रिज्म ये है प्रिज्म एबीसी इज a प्रिज्म this AB and AC are the two refracting surfaces BC is the base. Okay. So a light is incident on the surface. This is your incident light. Let OP is the incident light. So if you draw a normal, हमें कौन करिया ये वाला तुम्हारा refracting surface. मुझे कौन करिए A pointed perpendicular draw करिए. Perpendicular मैंने कौन surface को perpendicular. ये वाला perpendicular. Surface को perpendicular. तो भाग दियो ये वाला इंसिडेंट रे ये वाला का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना एंगल ऑफ इंसिडेंट माने कौन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल तो एनी लाइट पासिंग फ्रॉम ये वाला का रेयर मीडियम ये वाला डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम and r refractive index वाला mu1 r refractive index वाला mu2 अगेन प्ले ये वाला रेयर मीडियम तो r refractive index वाला mu1 mu1 माने है refractive index in rarer medium mu2 है refractive index in denser medium again also mu1 माने free air है जार refractive index है mu1 so light will travel from rarer denser so light will bend towards normal so light is incident like this okay outer कहाँ हो ये about the denser medium outer ये about rarer medium again how light band पर यो band light travel from denser to rarer the light will away from normal तो आपसे कौन बोले मुड़ी ये normal draw करी draw a perpendicular to surface तो एटी कौन हो light वाला denser to rarer so light will move away from normal so normal रू दूर रहो so this is the incident ray this is the refracted ray and this is called emergent ray आपका वो emergent ray तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये r1 ये होगा r2 और ये होगा e एंगल ऑफ इमर्जेंसी ओके तो भाभी दियो ये सरफेस न था ना जब तमरा सरफेस नाही सो लाइट सीधा मूव करनेदा एंड इफ यू जॉइन दिस लाइट जो एंगल फॉर्म कला that is called deviation that is called d is the angle of deviation d is the angle of deviation so first time we have ABC is a triangular prism ABC is a triangular prism ओके एबी कौन वाला ट्रायंगुलर प्रिज्म जो तरह की एबी एंड एसी ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस एबी एंड एसी आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस so AB and AC are the refracting surface I have about angle of incidence I is the angle of incidence
and R1, R2 are the angle of refractions. R1, R2 are angle of R1 is the angle of refraction. Similarly, R2 is the angle of incident for the second surface, A surface का. और E of angle of refractions. Okay. So totally आपको जो E है angle of emergence. So R1, take it now. R1 and R2 are the angle of refractions. So जो point नॉर्मल तरह मिसला, अब आना वाला P, आना वाला Q, आना वाला R, आना वाला let S. ये आपको पहले perpendicular surface को ये perpendicular. ये को perpendicular. है So वाला and OP is the incident ray. OP is the incident ray. And PQ refracted ray. And that is Q, let take it figure X. QX is the emergent ray. And A stands for angle of prism. Mu1 is the refractive index of A and mu2 is the refractive index of glass, that is prism. Okay, अब नोट करो फटाफट डायग्राम लगा लो जल्दी. We have proved that mu equals to sin A plus dm2, sorry, sin A plus dm by 2 by sin A by 2. So how to prove this one? So this is your angle of incidence I. This angle and this angle opposite angle. This angle I and this angle also I, opposite angle. So this will be your, this angle will be equals to your, because total angle देखो ये total angle I है ना, ये R1 है ना, तो A angle ना होगा तुम्हारा I minus R1. Similarly ये R opposite angle, ये R opposite angle. जब तुम्हारा ये R2 है ना, तो तुम्हारा ये जो A angle ऐसी हो, A angle है वो तुम्हारा, that is E minus R2. तब मैंने angle RPQ. Angle RPQ is your I minus R1. Similarly, angle RQP. Angle RQP, that is your E minus R2. Hello? So, A angle. In triangle PQR, the A triangle ray, a tinta angle, A angle plus A angle plus A angle है 180 degree. So in triangle PQR, that is your angle RPQ plus angle RQP plus angle PRQ is your 180 degree. A angle plus A angle plus angle का वाला 180 degree. तो बोले angle RPQ कितना बचे मुझे, that is I minus R1 plus angle RQP angle तो बचे मुझे angle वाला E minus R2 plus angle PRQ. angle देखो angle PRQ बोले पूरा angle 180 degree. जो तो बोले ये PRQ होगा, that is 180 minus D होगा. तो angle हमारे A angle equals to this angle equals to 180 minus D. 180 minus D equals to 180 degree. So 180 cancel. I plus E रहेगा, I plus E. ये माइनस R1, ये माइनस R2, माइनस वाला कॉमन R1
plus R2, that is your D is there, D separate वाले को आपको plus ही दियो, so that is your plus D. So I plus E minus R1 plus R2 equals to D. Hello. Now, in triangle PQS, in triangle PQS, so A angle plus A angle plus A angle equals to 180 degree. So angle SPQ plus angle PQS plus angle PSQ is 180 degree. अच्छा प्ले वाला angle SPQ मैंने कहती हूँ that is R1 plus angle PQS मैंने that is R2 and angle PSQ. So angle PSQ, take it angle PSQ, that is 180 degree. So this is your taken equation number 1. So this is your equation number 2. Okay. Now देखो ये दोनों डबल ये अलग क्वाड्रिलेटरल APSQ is a quadrilateral चतुर्भुजर चारटा एंगल मिसिल 360 डिग्री हबो जदि ये 90 हेला ये भी 90 हबो ये भी 90 हबो त माने गेला A 90 A 90 180 हेला और होइला A एंगल प्लस A एंगल त माने A एंगल प्लस एंगल दो 180 डिग्री हबो. So in quadrilateral APQS तो ये तो 90 डिग्री ये 90 डिग्री तब पड़ेगा 180 पड़ेगा तो रहेगा A एंगल प्लस एंगल दैट इज एंगल A प्लस एंगल इधर एंगल पे आपको A नहीं लागू एंगल A प्लस एंगल PSQ equals to 180 degree. So take it equation number 3. अब लिखो नोट करो फटाफट. तो देखो now from equation 2 and 3, from equation 2 and 3 तो कौन होगा 2 and 3 रे ये तुम्हारा R1 plus R2 एंगल PSQ 180 ये भी 180 हमारा एडा एंगल को स्टेम दैट इज R1 plus R2 plus angle PSQ equals to A plus angle PSQ. So here I cancel R1 plus R2 equivalent A. देखो अगर from equation 1 ले take it equation number 4 अगर आपको पहले 4 ले जाओ तो आप देखो equation 1 का देखो हमारे R1 plus R2 equals to 8 पकड़ा. So use equation 4 in equation 1. So कौन होगा that is I plus E minus R1 plus R2 A. तो बोले R1 plus R2 उसको A ना पकड़ दियो A equals to ये तो that is D अछि. So that is I plus E equals to सेपरेट वाला A plus D. देखो पहले D का इक्वेशन पहले बोला I plus E equals to A plus D और पहले R1 plus R2 equals to A. ये D टा लेवल very important equations. तो फिर आगे वीडियो को कौन करे एज्यूम करिया जदी तमरो D दा डेविएशन दा मिनिमम होबो तो D is the deviation. If deviation that is angle of deviation is minimum, angle of deviation
is minimum that is कौन हो मिनिमम I equals to E हो और R1 equals to R हो कौन हमरे I equals to E हो R1 equals to R2 तो ये पकड़ दियो बोले और I equals to E तो I equals to E बने लिखते आसियो 2I ये तो इसलिए 2I equals to A plus D डा प्ले कहाँ हो D तो हमारे प्ले कहाँ हो DM मिलियो DM is the minimum deviation D is the angle of deviation so D will be D minimum. So I get out equals to A plus dm by 2. Similarly, R1 plus R2 equals to A. dm equal है जो that is 2R कर दियो. 2R that is equals to take it R. But 2R equals to A. So R equals to A by 2. So R equals to A by 2. I equals to हला A plus dm by 2. Note करो फटाफट note करो. So, हमें apply करना Snell's law because light travels from red tensor. So from Snell's law, mu equals to sin I by sin R. So mu equals to sin of it will I माने है पहले मन रखो that is A plus dm by 2 by sin A by 2 and a sin play I मान लेते कि R बना कि ये हमारा प्ले that is called the prism formula. This is the prism formula. ହେଲା so ଆମେ next class पढ़िया डेविएशन कौन एंगल ऑफ इमर्जेंसी कौन लाइट टाइपोलॉजी कौन हो तर कंडीशंस कौन हैला तार डिस्पर्सिव पावर कौन डिस्पर्शन कौन हम डिटेल्स पढ़े नेक्स्ट क्लास रे ठीक अछि थैंक यू।